Assalamu alaikum class. In the last lecture, we have completed those steroidal hormones which are involved in the male or female sex activities, or anti-estrogens, and as well as we have studied the anti-estrogens and anti-androgens. These are the other steroidal hormones. These steroidal hormones, they have not got any activity in the male or female reproductive system. Indirectly may have got something related to that one, but they are not responsible for any reproductive activity. But there is one more thing. If we are going to consider the hormones which are released from that adrenal gland, at least 3 types of the hormones are there. Maybe the glucocorticoids, the mineralocorticoids, and the other one, those are considered as the androgenic compounds, as they are secreted from that adrenal gland. But that is the third type of the compound, which we are not going to discuss here, or which we are not going to including here, because those are related with different activities. They are maybe considered as the androgens, which are synthesized, secreted from that adrenal gland. We are not going to consider that one. Just here we have got the glucocorticoids and the mineralocorticoids. Adrenal gland, the inner core of that one, that is medulla, that is responsible for the secretion of catecholamines, and the shell cortex of the gland synthesizes adrenocorticoids. That's why they say that they are synthesized by the adrenal cortex. And just I have told you, here in adrenocorticoids we are including glucocorticoids and mineralocorticoids, and the third one we are not including in our discussion. These glucocorticoids, they regulate the carbohydrate, lipid and protein metabolism. Any adrenocorticoids or corticosteroids, they are going to be classified, divided into glucocorticoids and mineralocorticoids. Glucocorticoids are responsible for the regulation of carbohydrate, lipid and protein metabolism. Mineralocorticoids, they are going to influence the electrolyte balance and fluid balance, or water retention or water retention. Glucocorticoids can be released or stimulated by certain factors such as noise, pain and emotion, or more precisely we can say they are going to be stimulated by stress. यहाँ पर बेटा ऐड कर लो,
बल्कि पहले कर लो, सच एज स्ट्रेस. पहले स्ट्रेस कर लो, then we have got this one. They are going to be stimulated by a number of factors. But first one is the stress. यहाँ पे stress को ऐड करो बेटा. We have got different pathological conditions such as Addison's disease, Cushing's syndrome and Cohen's syndrome. And these are the diseases due to something wrong with the synthesis of the glucocorticoids. Maybe they are going to be synthesized more, any hyperactivity of the gland, or maybe they are going to be synthesized less, hypoactivity of the gland. In Addison's disease, these types of the symptoms can be observed: extreme weakness, anemia, nausea, anorexia, vomiting, low blood pressure, hyperpigmentation, depression. The disease may be due to atrophy or destruction of cortex, which may be due to tuberculosis or decreased secretion of ACTH. And in the condition of tuberculosis, maybe the adrenal gland is affected, and due to atrophy, due to degeneration of that gland, destruction of the cortex, these symptoms may be appeared. In Cushing syndromes, hyperadrenalism, hyperactivity of adrenal gland may be due to tumor in the cortex, may be due to increased production of ATCH. What does it mean? It means this ATCH, that is ACTH, not ATCH. This ACTH, that is going to influence that one. अगर ये डिक्रीज होगा तो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड था ये भी डिक्रीज हो जाएगा, और अगर ये हाइपर एक्टिव होगा तो हाइपरएड्रेनलिज्म विल बी, एंड देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. इसको सही कर लो, ACTH नॉट ATCH, ACTH. और मे बी ड्यू टू पिट्यूटरी कार्सिनोमा. जैसा आप देख रहे हो, ACTH कम होने से ये कम हो रहा है इसकी एक्टिविटी एड्रेनल ग्लैंड की, और ACTH बढ़ने से इसकी एक्टिविटी बढ़ रही है. तो जिस तरीके से ये एक दूसरे का अपोजिट है, इन द सेम वे द सिम्टम्स आर गोइंग टू बी. अगर वहाँ पर आपके पास लो ब्लड प्रेशर था तो यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर होगा. द सेम वे द सिम्टम्स आर क्वाइट अपोजिट टू ईच अदर. इन कोन सिंड्रोम, ये जो सिंड्रोम है ये क्या है कि जो सिंथेसिस हो रही है वो सिंथेसिस जो है वो करेक्ट वन नहीं है. सेवनटीन पोजीशन पर, 17 अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो रही है. और नतीजा उसका क्या हो रहा है? We have got one compound that is aldosterone without 17 alpha hydroxyl group in Cohen syndrome. But here at the moment we are not discussing aldosterone. After a few minutes that will be discussed, this mineralocorticoid. Here we are dealing with the glucocorticoids. Symptoms include hypernatremia, polyuria, alkalosis and hypertension. And if the
adrenal gland is removed, urea in the blood is increased, weakness of the muscles, decrease in liver glycogen, resistance to insulin, reduction in resistance to trauma, resulting in mechanical and chemical shock, electrolyte disbalance, potassium ions are more, and excretion of sodium and chloride increase हो जाएगा, और पोटेशियम जो होगा उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी हाइपरकैलेमिया होगा और हाइपोनेट्रीमिया क्या सोडियम क्लोराइड इसके एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी, और ये पोटेशियम जो है इसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी ब्लड में, और ये कम हो जाएंगे, सोडियम और क्लोराइड जो है ये कम हो जाएंगे, एक्सक्रीशन इनकी इंक्रीज हो जाएगी। तो हाइपोनेट्रीमिया और या तो आप नेट्रियूरेटिक कह सकते हो इनको, लेकिन यहाँ पर आप क्लोरोयूरेटिक कहोगे, लेकिन ये पोटेशियम को स्पेयर करेंगे, पोटेशियम इज गोइंग टू बी मोर इन द ब्लड। If you are going to consider the SR the same skeleton, cyclopentanophenothyrine, carbonyl group at carbon 3, double bond between 4 and 5, ऑक्सीजन में भी इन द फॉर्म कीटोनिक और कोलिक, यानी C डबल बॉन्ड O भी हो सकता है, COH भी हो सकता है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी। सब्सटीट्यूशन और मॉडिफिकेशन एज इन द केस ऑफ सिंथेटिक डेरिवेटिव्स, द एक्टिविटी में भी decreased or increased. सब्सटीट्यूशन जो है आमतौर पर एट 21st पोजीशन पर हैलोजन एसिटाइलेशन से शुरू किया गया, और ये जो डेरिवेटिव्स थे वो कौन से थे? सिंथेटिक डेरिवेटिव्स। सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ब्रोमो सब्सटीट्यूशन एट 9 alpha position will decrease the glucocorticoid activity, ये ग्लूकोकॉइड नहीं है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होगा, इसको सही करो यहाँ पर, इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ब्रोमो सब्सटीट्यूशन एट 9 alpha position will decrease the glucocorticoid activity. Substitution of 9 alpha chloro increases activity, यानी अगर ब्रोमो लगाएंगे तो कम हो गई और क्लोरो लगाएंगे तो ज़्यादा हो गई। 9 अल्फा क्लोरोकॉर्टिजोन, ISONE, क्लोरोकॉर्टिजोन is used as an effective agent in rheumatoid arthritis. It is an active compound. तो ब्रोमो कम कर रहा था, लेकिन क्लोरो जो है that is going to increase the activity, and one compound that is 9 alpha chloro substituted glucocorticoid or chlorocortisone. Chlorocortisone acetate means यानी जो 17 पोजीशन थी वहाँ पर जो है आपके एसिटेट यानी एसिटिक एसिड से आपने उसको OH को रिएक्ट कराया था, और 9 अल्फा पोजीशन के ऊपर क्लोरो ग्रुप लगा दिया। दैट इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव कंपाउंड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये स्पेलिंग सही है, कॉर्टिसोन, ये वाली जो है इसको सही करो, ये कॉर्टिसोन लिखना पड़ेगा, कॉर्टिसोन
यहाँ पे कॉर्टिसोन को सही करो, यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की स्पेलिंग सही, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कर सकती हो करेक्शन। Cortisone acetate have certain side effects. By this substitution, glucocorticoid activity is going to be decreased and mineralocorticoid activity is going to be increased, which is undesirable. And we are using the compound as glucocorticoid, but in that glucocorticoid, the overlapping effect or the undesirable effect is the activity as mineralocorticoid. We don't require that one. We have to synthesize the compound with the least mineralocorticoid activity and the maximum glucocorticoid activity. Maximum glucocorticoid activity. Introduction of double bond between 1 and 2. One of the reaction which is carried out by the microorganisms, we have got delta 1 corticoid or delta corticoid. असल में यह होगा corticosteroid, delta corticosteroid. डेल्टा कहाँ पर आपने बताया था, जब से पहले देख रहे थे कि डेल्टा जहाँ पर लिखा हुआ है क्या मतलब हम बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो ये 1 पोजीशन पर या 1 और 2 जो है वहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है। तो डेल्टा 1 यानी 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड 1 एंड 2। तो रिजल्टिंग कंपाउंड वो क्या होंगे, डिहाइड्रोकॉर्टिजोन, हाइड्रोकॉर्टिजोन, विच आर नोन एज प्रेडनिसोन एंड प्रेडनिसोलोन, and commercially they are available as prednisone and prednisolone, two important potent anti-rheumatic agents. So by the introduction of a double bond between 1 and 2, we are going to have delta corticosteroids and delta corticoids or corticosteroids or they are very potent anti-rheumatic compounds. Our glucocorticoid activity is increased by the introduction of a double bond between 1 and 2. Here again we have got the acetate derivatives. Due to the presence of this acetate, lipophilic nature is increased, duration of action will be more. And this type of the compound is mainly present in the suspension and in ointments. Adrenocorticoids, they are synthesized from the stepwise oxidation of cholesterol. Already we have seen that one, resulting in hydrocortisone having hydroxygroup having beta position. From hydrocortisone, cortisone will be obtained. दोनों में फ़र्क क्या है, एक के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद और एक के अंदर कीटोनिक ग्रुप, एंड दे आर इंटरकन्वर्टेबल। हाइड्रोकॉर्टिजोन, उससे आप कॉर्टिजोन हासिल कर सकते हो। डिफरेंस क्या है, 11 पोजीशन के ऊपर एक के अंदर कीटोनिक ग्रुप मौजूद है और एक के अंदर हाइड्रोक्सिल, एंड cortisone and hydrocortisone are interconvertible. And if the hydroxylation takes place at 18th position, the resulting compound will be aldosterone, which is a mineralocorticoid.
cortisone or hydrocortisone, they are glucocorticoids. But just by the introduction of one more hydroxyl group at 18th position, we have got a compound which is aldosterone, which is mineralocorticoid, which have got the mineralocorticoid activity. तो ये पेन रिलीफ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, एलर्जी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, एजमा में इस्तेमाल कर रहे थे, और ये जो कंपाउंड्स हैं ये कहाँ पर हैं? एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड. दे आर इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड इन द fluid retention or retention, water retention or fluid. This is a general flow chart for the synthesis, जो पहले भी अभी आप इससे पहले देख चुके हैं. उसी तरीके का फ्लो चार्ट है. ये प्रोजेस्टेरोन आ गया, डाइहाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन, एंड्रोस्ट्रीन डायोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल. ये पिछले चार्ट में आप स्ट्रक्चर्स के साथ देख चुके हो. यहाँ पर सिर्फ फ्लो चार्ट है, यहाँ पर स्ट्रक्चर्स नहीं बने हुए हैं. यहाँ पर आपके पास ये आर द 7 ऑक्सीकॉर्टिसोल और उसके बाद ये कॉर्टिसोल. Cortisol is the hydroxy cortisone. From this cortisol, we can get cortisone, and this cortisone and cortisol, they are interconvertible. They are interconvertible, and here we are getting it from the progesterone. Here again, from progesterone, we are also going to get the aldosterone. Just I have told you the difference is one hydroxyl group at carbon 18, one hydroxyl group at carbon 18. Here just you can see cortisone, 21 carbon, थर्ड पोजीशन पर कार्बोनाइल ग्रुप, फोर्थ पर इन डबल बॉन्ड. उसको हमने इसको पहले कहा था कीटो, 3 कीटो 4 इन, 3 कीटो 4 इन. Hydroxyl groups at position 17 and 21. This is 21 position and this is 17 alpha. This is hydrocortisone. First we are going to get that one hydrocortisone. Here you can see cortisol, that is hydrocortisone. And from this hydrocortisone we are going to get this one, the cortisone, and the difference is here. Here cortisone we have got OH. In aldosterone, we've got one more hydroxyl group. Just in the next slides you can get that one. पोजीशंस के लिए बेटा दोबारा से अगर आप पीछे चले जाओगे
तो आपके तमाम पोजीशन यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर पोजीशन आपके पास क्लियर हो जाएंगी तो कौन सी पोजीशंस कहाँ पर है। ये 21st पोजीशन की बात हो रही है, ये 17 पोजीशन हो गई जिसकी बात हो रही है। ये 18 पोजीशन है जिसकी बात हो रही है। So we have got that one. These adrenocorticoids, they are synthesized from the stepwise oxidation of cholesterol, resulting in hydrocortisone having hydroxyl group at 11 beta position, from hydrocortisone having ketonic group at 11th position. पोजीशन पर ये कीटोनिक ग्रुप मौजूद है, या 11 पोजीशन पर ये हाइड्रोक्सिल, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर दिस वन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर दिस hydrocortisone, cortisone, and then magnesium. These two are glucocorticoids and this one is mineralocorticoid. This one is mineralocorticoid. By this we are going to finish our lectures.